Hello and a very warm welcome to today's session brought to you by Team Testbook Super Coaching. I hope all of you are doing really well this Friday evening. Without further ado, जल्दी से start कर देते हैं आज की क्लास को. आज की क्लास थोड़ी सी brief रहने वाली है because I'm not completely fine. I'm a little under the weather. My eyes are paining a little more than expected. So, you're also going to be seeing me a lot of times in today's class using my specs because my right eye is like paining a little bit. Good evening, Prerna. Himanshi, that's really good. Himanshi बेचारी को बहुत ही she met with an accident. I'm really sorry to hear that, and please take care. And hats off and salute your so-called courage to make sure that you're also attending the sessions. Good evening, Prerna, Satyendra, Anjali, Neha, Divya, Balkishan, Mosami, Satyendra. Thank you so much, Satyendra. That's very sweet of you. तो देरी नहीं करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. आज की क्लास को मैं थोड़ा सा ब्रीफ रखने वाली हूँ. एक commonly asked जो question है that also I will be addressing through the course of this session. तो देरी नहीं करते हुए फटाफट से let's just quickly get started. I hope आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सैटरडे और संडे को एक मैराथन क्लास के लिए मिलने वाले हैं. I'll give you more updates on the Telegram platform also. So नीरजा मैम टेस्ट बुक पे मैं आपको उसकी डिटेल्स दे दूंगी, इंग्लिश लिटरेचर हस्कर्स पे भी. तो just make sure that all of you are blocking your calendars and both the days, the last 2 days of the year, you're definitely making sure that you upskill yourself. तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी I will send it, नीरजा मैम टेस्ट बुक टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे भी I'll send the link, right? I will send the link all together and this is at 12 p.m. ठीक है. तो सैटरडे और संडे दोनों दिन हम लोग मिलने वाले हैं एंड ये दोनों को अच्छी तरह से अटेंड कीजिएगा. देयर इंपॉर्टेंट मास्टर क्लासेस एंड वर्कशॉप्स जो हम लोग कर रहे हैं in order to ensure that you're also strengthening your basics of English literature overall. आज के टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग प्रोज हम लोग हमारा प्राइमरी एजेंडा आज क्या रहेगा. हमारा प्राइमरी एजेंडा रहेगा आई बी टेलिंग यू अबाउट व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोज और फॉर्म्स ऑफ प्रोज को हम कल के सेशन में करेंगे. तो कल जब मैं आपको मैराथन के लिए मिलूंगी एट दैट टाइम आई विल आल्सो बी टेलिंग यू अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोज, लेकिन 3 काइंड्स ऑफ प्रोज जो आपके होते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव प्रोज, एक्सप्लोरेटरी प्रोज. इनको हम लोग बेसिकली एक्सपोजिशनल एक्सपोजिशन एक तरह से देते हैं. एक्सपोजिशन इज लाइक रिमेंबर फ्राइटैक्स पिरामिड प्रिंसिपल. आपका एक्सपोजिशन स्टार्टिंग में हो जाता है, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, डेनूमा एंड फाइनली यू आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड. ये फ्राइटैक्स और पिरामिड प्रिंसिपल आपके ड्रामा में भी यूज होता है. सो अंडरस्टैंडिंग प्रोज में हम 3 वैरायटीज ऑफ प्रोज को करेंगे, राइट? गुड इवनिंग प्रगति, डोमिनेटर, रोनिशा, मोनिका, सुप्रतिम, नेहा. यस नेहा, यूट्यूब के ऊपर होगा. गोविंद, फातिमा. So this is going to be on YouTube and I'll of course be telling you about your master classes on app as well. मैं इसके बारे में भी आपको कल बता दूंगी. I'll give you the information tomorrow and day after. ठीक है. गुड इवनिंग फातिमा, गुड इवनिंग बच्चे. तो देरी नहीं करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. तो 3 वैरायटीज, नैरेटिव हो गया, आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया, आपका एक्सपोजिशन हो गया. ये 3 वैरायटीज को हम देखेंगे और एक राइटिंग हम लोग आज कवर करेंगे. दिस इज अ वेरी फेमस इंपॉर्टेंट येडिश भाषा भी इन्होंने सीखी है. ही इज एन ऑस्ट्रेलियन Jewish writer that we'll be talking about, जिनका वर्क है मदर. So we know about मदर written by Gorky, which is inspiring Bertolt Brecht's Mother Courage, जैसा कि हम लोगों ने कल की YouTube क्लास में किया था. And we had also studied German writers हमारी क्लासरूम क्लास के अंतर्गत. But right now today we will be looking at Mother, a short story that is coming by a very important Australian writer, which is a form of prose. ठीक है. तो इस तरह से हम प्रोज को समझेंगे. तो आज जैसे कि मैंने आपको कहा एजेंडा बहुत ही सिंपल है, काफी जल्दी आज आपकी क्लास खत्म हो जाएगी. तो देरी नहीं करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करें आपके आइस ब्रेकर क्वेश्चन से. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि कितने लोगों ने कितनी पढ़ाई की है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली स्टडीड व्हाटएवर वाज आस्क्ड फॉर ऑल ऑफ यू. हु इज द फर्स्ट एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर एंड हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जिस्टेंशियलिस्ट. मैंने आपको कल बोला था सारा अपस्टोन, मैंने आपको टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे सारा अपस्टोन की कॉपी दे रखी है, राइट? सो प्लीज रिमेंबर दैट. नेहा ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है. कूपन कोड फॉर योर कोर्स. I will be Neha. I will be sharing. Thanks so much. After icebreaker question, I will be. ये काफी डाउट हो रहा था, तो this week and next week I will be in between, for 30-40 seconds telling you a little bit about the foundation batch also, क्योंकि काफी queries आ रही थी आप लोगों का. काफी सारे queries जैसे मैं WhatsApp पे भी देख रही थी as well as Telegram पे देख रही थी. A lot of you were asking कि 8:30 p.m. की classes कैसे होती हैं. So I'll be telling you about that. Don't worry at all about it. Fine. Because here of course these are more YouTube classes are more
mechanisms and ways through which we are actually discussing, but chronologically structured way में properly एक तरह से जो unit by unit आप पढ़ते हैं, so that of course is happening in the foundation batch. So I'll give you more details about that, don't worry about it. ठीक है? Okay, excellent. Tithi Das has given the right answer. Supratim has given the right answer, so excellent. So Supratim ने अपना homework करा है. Supratim has done the homework and Tithi Das has done the homework. Excellent. I'm so proud of both of you. ठीक है? देखिए थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क देती हूँ, वो भी आप नहीं करते हैं, तो इट रियली पेन्स ओवर हियर. डोंट डू दैट एट ऑल. एंड लाइक आई सेड, माय राइट आई इज लाइक पेनिंग अ लिटिल टुडे, सो डोंट डू दैट एट ऑल. मेक श्योर कि आप अपना होमवर्क डेफिनेटली करके आए हैं. थोड़ा थोड़ा देती हूँ, मैं बता भी देती हूँ, पीडीएफ भी आई गिव इट टू यू कि ये करना है, एंड दे आर ऑल देयर. और अगर नहीं मिलता है तो यू कैन ऑलवेज टेल मी. सोरेन केरकेगार्ड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट एग्जिस्टेंशियल राइटर्स. और केरकेगार्ड, आपके बाकी एग्जिस्टेंशियल राइटर्स वर कंसिडर्ड टू बी एथीस्ट, राइट. अगर आपने चैप्टर 8 सारा अपस्टोन का एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ा होता है, उसके ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ ही, मैं अभी आपको उसका पैराग्राफ का एक्सर्प्ट भी दिखाने वाली हूँ, सो दैट यू गेट क्लैरिटी ओवर इट. आप लोगों ने बुक नहीं खोली है. मैंने आपको कल क्या बोला था, आपका होमवर्क क्या था, रॉटलेज का मॉडर्निज्म आपको करना था, एग्जिस्टेंशियलिज्म आपको पढ़ के आना था. दिस इज व्हाट आई टोल्ड ऑल ऑफ यू, बट नॉन ऑफ यू हैव क्लियरली डन. फ्रेंच फेमिनिज्म भी मैंने आपको बोला था, तो मैंने आपको बताया भी था. आई आस्क्ड ऑल ऑफ यू टू कंप्लीट दैट, बट वेरी अनफॉर्चुनेट. ठीक है? So please keep that in mind. Oh God, Shabnam, please take care. Good evening, Lidshi. Good evening, Bache. So Kierkegaard was a Christian person in comparison to other atheists. So अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी अपना homework करा होता, थोड़ा सा भी आप अपनी PDF को आपने देखा होता, that is the reason I've shared सारा अपस्टोन का PDF on the Telegram platform as well. मैंने आप लोगों के साथ सारा अपस्टोन का करा हुआ है. Soren Kierkegaard is coming. Soren Kierkegaard is coming, right? And Kierkegaard was actually the first existential philosopher, even before your Nietzsche, even before Albert Camus, even before Jean-Paul Sartre that we talked about yesterday, right? जो precursors to absurd drama हम cover कर रहे थे, ठीक है? Who is he? He's a Danish philosopher and theologian, ठीक है? And जो आपके बाकी के existentialists थे, वो atheists थे. They were disbelievers in God, right? But Kierkegaard was actually rooted in Christianity. That was a major difference that you were able to see. So please do your homework religiously. Rather YouTube के लिए even classroom students आप एक different notebook ही बना लीजिए, ठीक है? I know मैं बहुत बार interconnections करती हूँ, but I want all of you to have a dedicated, each and every member over here who's watching this, have a different dedicated notebook completely for these YouTube discussions. They are very important and हम topic wise, we are looking at it, so they'll be really helpful. Good evening, Sanchri. Hi, Bache. Good evening, Priyu. Sanchri, I will be talking about ओरिएंट ब्लैक वन एज वेल, ठीक है? तो प्लीज रिमेंबर दैट. नेहा, तो आपने मेरे को बताया क्यों नहीं अगर आपको नहीं मिला? ठीक है, मैं आपको दोबारा से रीटैग करके दे देती. मेरे पास मेल आईडी था ना, तो आप मेरे को मेल करके बता सकते थे कि मेरे पास नहीं है, मैं दोबारा से भेज देती. ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे आप, ठीक है? ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे आप, थोड़ा सा हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा. सेकंड क्वेश्चन आपका आइस ब्रेकर क्वेश्चन आ गया है. हु डेवलप्ड केरकेगार्ड्स आइडियाज? सो केरकेगार्ड, सोरेन केरकेगार्ड, द डैनिश फिलोसोफर हु वाज अ क्रिश्चियन फॉलोअर अनलाइक द अदर पीपल, ठीक है? सो हु डेवलप्ड केरकेगार्ड्स आइडियाज? केरकेगार्ड के आइडियाज किसने डेवलप करे थे? हु वाज द वन हु डेवलप्ड दिस डैनिश राइटर्स आइडियाज? किसने केरकेगार्ड के आइडियाज को डेवलप किया था? चलिए जल्दी बताइए. See, free paid कुछ नहीं होता है. You're all investing your time, so it's actually more your investment of time, which is really important, right? These are just discussion formats altogether. Okay, चलिए जल्दी से बताइए. What is the correct answer over here? What is the correct answer over here? What becomes the right answer? Who developed Kierkegaard's ideas? Who developed Kierkegaard's ideas? And this is also very important. Again, अभी भी अगर कोई PDF को जा रहा है, they'll be able to actually see the answers, right? अभी भी if you're actually going back, you're revisiting altogether. Okay, Supratim, that's very honest. That's very honest of you. That's very, very honest of you. I really appreciate that. See, आपको यहाँ पर याद रखना है that Edmund Husserl and Martin Heidegger. So Martin Heidegger was actually the person जो सोरेन केरकेगार्ड के आइडियाज को डेवलप करते हैं. जैसे हम स्ट्रक्चरलिज्म में भी देखते हैं कि क्लॉडी लेवी स्ट्राउस के जो आइडियाज हैं, they are actually being developed. They are the ones which we are primarily looking at. So ये important हो जाता है. या फिर आपके Platonic ideas are all associated with the Socratic teachings altogether. तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए. You should be well aware about these things also.
Please make a note of that. So when we are talking about who developed Kierkegaard's ideas were developed by Martin Heidegger, right? So it was actually Heidegger. It was actually Heidegger or Edmund Husserl भी यहाँ पर important हो जाते हैं. Edmund Husserl also becomes important over here. I'll just reduce my size also so that you'll be able to see it a little better. Yes, I hope you're able to see it better. So Kierkegaard जो Danish philosopher थे, the first important existential thought thinker, thought leader as it's called, his ideas were developed by Martin Heidegger. Martin Heidegger German थे, Kierkegaard Danish थे. Please don't forget their origins. That is also important. Okay, and he had of course been a student of Edmund Husserl. Edmund Husserl के student थे Martin Heidegger, right? Heidegger is there, and Husserl of course is one of the leading philosophers of phenomenology. जब आप reader response theory भी हम cover करेंगे, we will be talking about Edmund Husserl's ideas altogether. So please keep that in mind that Martin Heidegger, who was a student of Husserl, he was the one who was actually giving shape to Kierkegaard's ideas. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है. Okay, these are very popular lines. These are very popular lines. Why are there beings at all instead of nothing? That is a question. Presumably, it is no arbitrary question. Why are the beings at all instead of nothing? This is obviously first of all questions. ठीक है, तो जल्दी बताइए ये किसने लिखा है? And this is a very important work, important line that you're able to see all together. And हम लोग इस question को discuss भी करेंगे. ठीक है, we will be talking about it. Good evening, Devashish. We missed you. You were late, but it's okay. No worries at all. चलिए जल्दी से बताइए what is the correct answer over here? What is the correct answer over here? And you know we will be talking about this concept also. By the way, this concept is something which is very important also. ये Hegel से भी associated है, right? This is actually trying to talk about, this is very important. This talking about existence, Dasein का जो concept है आपका. Yes, Sanchari has got the right answer. This is Martin Heidegger. Very good, Govind. You're very honest. This is Martin Heidegger. Being and time, right? Being and time जो 1927 के अंतर्गत आ रहा था. You were able to see that Martin Heidegger was the person. So where is he writing it? Being and time. ठीक है, being and time में Martin Heidegger, being and time के अंदर what are we able to see? Being and time के अंदर we are able to see that Martin Heidegger is talking about these lines. These lines are being spoken about, and this is actually associated with a very important concept in existentialism, which we will be actually looking at also in the coming times. This is basically existence. ठीक है, indeterminate existence, the scene that we're talking about. Okay, so being in time, Martin Heidegger. तो थोड़ा सा I hope आपको clear हो गया होगा. इसमें आप और चैप्टर के अंदर जाएंगे तो फ्रेडरिक नीत्शे के ऊपर क्वेश्चन है. You will be going a little further altogether, तो you know you'll be able to see most of these questions that are coming in. तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा. ठीक है, so again my humble submission to everybody. अब जैसे न्यू ईयर आ रहा है, our new year resolutions, I'll be writing some of the new year resolutions for all of you. All of you can add those, you know, but you'll have to be regular. You'll have to be much more motivated. June attempt, I want maximum conversions. Let's just make sure that all of us are working very hard so that all of you, you know, are able to crack a GRF, and that's when you actually hit at net. Okay, so that becomes really important. All right, now with the icebreaker questions being over, Neha ने जो question पूछा था, I would like to quickly come on. ठीक है, I'd like to quickly come on. Let me just quickly share my screen with all of you before we go further. क्योंकि यही हो जाता है कि हम लोग बाकी सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, but we actually forget. तो इसीलिए मैंने इस बार I will one second, where is the window capture. I'll just show you my screen. Just give me 1 second. I'll just quickly show you my screen because अब आने वाले टाइम में ये आपका और ज्यादा ही बढ़ेगा. ठीक है, ये आपका और ज्यादा ही बढ़ेगा. So quickly you know walk you through a couple of things which are important over here. सबसे पहले तो please remember that your foundation batch which is there, your foundation batch is actually going to be helping you prepare for most of the literature based examinations. इसका जो syllabus है, ये जो हम लोग cover कर रहे हैं structured way में, हम लोग काफी सारे टॉपिक्स को कवर करें. यू कैन एक्चुअली गो टू द एप्लीकेशन, यू कैन फिगर आउट ऑल द डिटेल्स ऑल टुगेदर. क्योंकि मैं काफी बार ये देख रही हूँ आजकल व्हाट्सएप पे भी जैसे हो रहा है या आपके टेलीग्राम पे आ रहा है कि 8:30 PM की क्लास. क्या है 8:30 PM की क्लास? इज योर फाउंडेशन बैच क्लास. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स मैं आपको बताती रहूंगी बिकॉज आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन देयर. 2 फॉर्मेट्स में वी आर करंटली मीटिंग. योर फाउंडेशन बैच क्लासेस आर देयर एट 8:30 PM and your YouTube sessions are running at 10:30 PM, right? So that is
what you're able to see. ठीक है, so please keep that in mind. गुलिस्ता बच्चे आप लोगों का ना, even I was seeing that, so there are actually two different teams which work, so I hope you understand that, you know, उन teams के भी families हैं, उन teams के भी they're also having New Year's, which is actually a moment of celebration altogether. So let's just give them like, you know, the benefit of doubt, but don't worry, you're going to be having regular back to back classes, neck breaking hard work अब आपका करने वाले हैं, and obviously 60 minutes of concept and 30 minutes of worksheet every day. आपका worksheet का content ही मैंने वही मैं पूरे एक हफ्ते से I was just collating, you know, like a hunter tigress, looking at various question papers, chronologically putting that, you know, in a sequential manner, चाहे वो questions related to post-colonial Indian writers, post-colonial Latin American writers, या post, so you know, there are huge variety of worksheets that we'll be practicing. That is what I was actually doing. ठीक है, so I'll keep on telling you, don't worry about it. Let's just quickly go back to the main topic and the main agenda. तो इसके बारे में मैं आपको बार बार बताती रहूंगी, तभी मैंने ब्लैंक स्लाइड ही कर दी थी, बिकॉज अदरवाइज मैं भी टॉपिक में इतना यू नो जल्दी से घुस जाती हूँ that I also forget to tell all of you about the foundation back. So this is what I was trying to tell you. Okay, चलिए देरी नहीं करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. Right now when we are talking about prose, we need to understand that, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारा 3 important categories of prose हो जाते हैं and forms of prose, जैसे आपका travelogue, short story, यू नो आपका नॉवल, ये फॉर्म्स हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे. आज मैं आपको 3 डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे आपका जो प्रोज होता है दैट इज एक्सपोजिटरी इन नेचर, एक्सपोजिशन, जैसा मैं आपको बता रही थी. फ्राइटैग का पिरामिड प्रिंसिपल, फ्राइटैग का पिरामिड प्रिंसिपल क्या कहता है? एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन, इलैबोरेशन. जैसे जब मैं आपको स्टार्टिंग में मिलती हूँ, आप लोग जब लेक्चर्स डिलीवर करने लग जाएंगे एज असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर्स, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे तो नहीं चले जाएंगे, यू नो, हाँ दिस इज द राइटर. नो, यू विल बी सेटिंग अ कॉन्टेक्स्ट, यू विल बी टॉकिंग अबाउट थिंग्स. जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया अंडरस्टैंडिंग पेट्रियार्की इज अ वर्क बाय बेल हुक्स ऑल टुगेदर. बाय द वे कल की क्लास में प्लीज अपना होमवर्क करके आइएगा. आई नो 12 बजे है तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाइएगा. आई मेक श्योर दैट आई क्विज यू अ लिटिल, या फिर मैं आपको, चलो कल की क्लास में आप आ जाइएगा, कल मैं आपको होमवर्क दूंगी फिर, ठीक है. बट अब आज जो का है वो प्लीज कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है. Thanks, Simanshi. Thank you so much. All right. Now, when we are talking about expository थोड़ा exposition, context setting ये करते हैं. Narrative एक तरह से describe करते हैं. They trying to actually show everything which is a part of it. And description आपका heavy in-depth analysis चला जाता है, ठीक है. So we'll be talking about all these three. आज का हमारा I'll introduce these three topics to you. I'll be introducing these three topics to you. Forms of prose जो है ना, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, ये मैं आपके साथ कल करूंगी, ठीक है. ये जो फॉर्म्स ऑफ प्रोज है मैं कल करूंगी. वैरायटीज ऑफ प्रोज हम लोग आज ही कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोज क्या है, व्हाट इज प्रोज ऑल टुगेदर. कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चों को यही क्लियर नहीं है कि क्या आ रहा है इस टॉपिक के अंदर. ऑफ कोर्स सिलेबस चेंज होगा बट प्रोज विल डेफिनेटली बी देयर, ठीक है. तो प्रोज जो है दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है डायरेक्ट, ठीक है. जैसे आपको याद है सीधी बात, नो बकवास. मुझे बताइए कि कौन से प्रोडक्ट का ये टैगलाइन है. दैट मींस यू जस्ट कमिंग ऑन टू द पॉइंट, राइट. सो यू आर नॉट सर्कमवेंटिंग. आप घुमा फिरा के कुछ नहीं बोल रहे हैं. यू आर कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, यू आर कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट. जैसे आपकी ये क्लासेस जो आपको नेट के लिए प्रिपेयर करती हैं वर्सेस द क्लासेस दैट आर योर लेक्चर्स, ठीक है. What are you able to see? You are actually able to see that there is a massive difference, ठीक है. There is a very there is a massive difference altogether, ठीक है. गुलिस्ता, दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया. मैंने ना पहले भी एक बच्ची ने बोला था सो वी विल ट्राई टू फिगर आउट. जैसे ये वाली जो न्यूज है, आई अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ यू आर नॉट एबल टू वॉच लाइव इवन दो आई से दैट वॉच लाइव. तो आई विल आल्सो ट्राई टू क्रिएट वन सो दैट ऑल ऑफ यू कैन एक्चुअली गेट, यू नो, कई बार अगर 5 मिनट्स का डिले हो रहा होता है या कुछ हो रहा है, कैंसिलेशन है या कुछ आपको एडिशनल रीडिंग मटेरियल मुझे देना है, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया दैट यू एक्चुअली गिव इट, दैट वी कैन प्रोबेबली हैव अ ग्रुप फॉर दिस एज वेल. ओके, एनीवे, ओके.
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी दैट यू आर बीइंग वेरी डायरेक्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोज ऑल टुगेदर, ठीक है. सो प्रोज इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स एन एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग. तभी आप देखते हो वन ऑफ द पायनियरिंग फॉर्म्स ऑफ प्रोज, वन ऑफ द पायनियरिंग फॉर्म्स ऑफ प्रोज इज एस्से, और एस्से से एसोसिएटेड फ्रांसिस बेकन हो गए. दे आर ट्राइंग टू शो क्लैरिटी, राइट. फ्रांसिस बेकन किससे एसोसिएटेड है? फ्रांसिस बेकन इज एसोसिएटेड विद एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग. एफोरिज्म्स क्या होता है कि आप उसको कंसाइज वे में बताते हो. यू आर ट्राइंग टू बी एज कंसाइज एज प्रिसाइज एज पॉसिबल. दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली डू, ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर दैट. नाउ यू नो प्लीज रिमेंबर पोएट्री. अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, इवन पॉल टॉक्स अबाउट दिस, राइट. You are able to see, and we'll talk about this. Paul Valéry, the critic, you know what he says. He's a French poet, and what has he actually done? He's compared prose to walking and poetry to dancing. वॉकिंग क्या है? वॉकिंग इज यूटिलिटेरियन. वॉकिंग इज व्हाट? वॉकिंग इज यूटिलिटेरियन. अगर मैं अपने दूसरे रूम से स्टूडियो रूम पे आके आई एम टेकिंग द सेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू, आई एम वॉकिंग फॉर अ यूटिलिटेरियन पर्पस, ठीक है. बट व्हेन आई विल बी डांसिंग इज गोना बी लाइक, यू नो, फॉर योर मे बी for your health reasons or your amusement purposes or because you're very happy all together, ठीक है. तो यहाँ पर प्रोज एंड पोएट्री के बीच में क्या डिफरेंस है? Prose being concise and straightforward. Prose being concise and straightforward is very utilitarian. ठीक है. ये आप किसके लिए कर रहे हो? जैसे हम लोग जो यहाँ पर नोट्स बनाते हैं प्रोज के फॉर्मेट में होता है, राइट. वी डू नॉट वांट यू टू रीड, ऑफ कोर्स वी वांट यू टू रीड, बट टाइम कंस्ट्रेंट्स होता है, तो इसलिए हम लोग रियल ओरिजिनल टेक्स्ट को नहीं पढ़ पाते हैं. दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी. गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग इथेरियल. ये हमारे लेट कमर्स हैं, ठीक है. देवशीष इज मेकिंग फन ऑफ मी, इज मेकिंग मॉकरी ऑफ मी, व्हिच इज ओके. ऑलराइट, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव प्रोज एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट. बाय द वे, यू नो, अभी मैं आप लोगों के वही क्लासरूम प्रोग्राम के लिए ना आई वाज जस्ट कंपाइलिंग द डेक्स फॉर योर रिसर्च एप्टीट्यूड. बाय द वे, वो रिसर्च एप्टीट्यूड की डेक्स बहुत अच्छी बन के आई है फाउंडेशन बैच वाली, बिकॉज उसमें काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा वो मॉड्यूल लगने वाला है whenever we start with research aptitude in your foundation batch class. तो उसके अंदर भी we'll be talking about, you know, जो आपका theoretical research जो आ रहा है, कैसे वो descriptive prose को लेता है. that is what we'll be looking at. तो descriptive prose जो आपका है, descriptive writing जो आपका है, it is either going to describe a person, ठीक है. ये या तो आपको एक person के बारे में ज्यादा बताएगी या landscape के बारे में ज्यादा बताएगी. Look at the example, the Nobel Prize winning writer, Australian writer Patrick White, वो वॉस में क्या करते हैं? He describes the Australian landscape. या J.M. Shringe, right? या J.M. Shringe क्या कर रहे हैं? Aran Islands को describe कर रहे हैं. जो आपके Aran Islands है उनको वो describe कर रहे हैं. That is what you are able to see. So you know, character को describe करना, person को describe करना, that is what you are actually able to see all together. Describer इनको describe करता है. डिस्क्राइबर का प्रेजुडिस नोशन हो सकता है, डिस्क्राइबर का डिफरेंट व्यू हो सकता है. देखो जैसे फॉर इंस्टेंस ग्रेट गैट्सबी, दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रोज राइटिंग. नॉवेल इज अ फॉर्म ऑफ प्रोज, ठीक है. वैरायटीज ऑफ प्रोज, 3 मेजर वैरायटीज ऑफ प्रोज, फॉर्म्स ऑफ प्रोज में नॉवेल इज आल्सो फॉर्म. तो निक कैरवे का जो ओपिनियन है अबाउट सोसाइटी, देखो अगर मैं निक कैरवे होती एंड इफ आई वांटेड टू शो दैट इट्स गैट्सबीज मिस्टेक, ग्रेट गैट्सबी में एस्कॉट फिट्जजेराल्ड के द्वारा, which is a very important work, उसमें we are able to actually sympathize with Gatsby. We think that he is a victim because of the way that the describer has described his narrative. Media by Euripides ने जो मीडिया लिखी है, we do not complain, even though she's actually committed a heinous crime of killing. And killing whom? Killing her own 2 sons to take revenge from her husband Jason. But जिस तरह से यूरोपिडीज ने उनको प्रेजेंट किया है, we are actually, so the description is tilted towards narrating a particular incident, ठीक है. तो प्लीज याद रखना. actually ये you know, when I'm teaching all of you, I want you all to keep on telling me कि एक बेस्ट राइटर बनने के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है. should you write
write descriptive prose? Should you write exposition wala prose? Should you write narrative prose? Think about this. We'll just be answering that. Okay, and that will also answer your question कि हमें नेट के लिए कैसे prepare करना चाहिए. Okay, now look at this example. I'll just hide myself. You can probably take a screenshot if you want to just see. जैसे और ये आपको हर जगह पे मिल जाएंगे. ठीक है, डिस्क्रिप्शन प्रोज, डिस्क्रिप्टिव प्रोज जो होता है, या कोई भी नॉवल, आप कोई भी नॉवल अपनी स्टडी एरिया में उठा लोगे, कोई भी शॉर्ट स्टोरी आप अपनी स्टडी एरिया में उठा लोगे, you will actually be able to see this kind of descriptive prose, right? You will actually be able to see this kind of descriptive prose altogether, right? So please keep that in mind. Please remember that. That is something which is actually very important. Okay, Aziz and Devashish are busy making my day. Okay, I think my eye pain will actually go eventually. मुझे ज़्यादा slides add कर लेनी चाहिए थी. Okay, I thought I'll leave you all early, so I didn't add a lot of slides. Anyway, okay. Now coming back to the next category of prose that we have. The next category of prose that we have is narrative prose. ठीक है, जो next category हमारे पास है, that is actually narrative prose. Narrative में आपको पता लगता है. So description में क्या हो रहा है? You are either describing a person or a landscape in greater detail. Alright. जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए हैं. ठीक है, ग्रेट गैट्सबी, मीडिया, ये सारे के. मीडिया ऑफ कोर्स इज अ प्ले, बट व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग इट इन प्रोज, राइट? रिमेंबर टीएस एलियट, क्रिस्टोफर फ्राई, दे आर यूजिंग वर्स फॉर्मेट, poetic format, but that's actually you are using that. Okay, so please keep that in mind. Please remember that. Okay. Right, Himanshi, right. I will be starting with this also. वो मैं comment section quiz next week onwards. So I think I'll be parceling a lot of gifts and goodies to a lot of you in the coming times. Okay. So that also reminds me, I have to actually inaugurate that. Gifts comments challenge. Okay. Right, so please keep that in mind. Please remember that. Okay, please remember that. Please keep that in mind over here. That narrative क्या होता है? Narrative is actually trying to describe what has actually happened, what were the key events all together. जैसे आप आके किसी को बता रहे हो, अरे पता है वहां पर ये हुआ, we had gone, we watched this movie, this is what we saw, ये हुआ. So you're actually trying to talk about, जैसे हम लोग plot में भी when we talk about, अच्छा ये ना आपके लिए बहुत important हो जाता है narratology के पर्सपेक्टिव से. नैरेटोलॉजी, इसको हम लोग कवर करेंगे भी. पीटर बेरी नैरेटोलॉजी का चैप्टर भी लिखते हैं ऑल टुगेदर. सो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू टॉक अबाउट इट, राइट? यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डिस्कस कि आपका नैरेटिव प्रोज कैसे डेवलप हो रहा है. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड प्लीज रिमेंबर आपका जो एक्सपोजिटरी प्रोज है, एक्सपोजिटरी प्रोज इज एक्चुअली ट्राइंग टू शेयर. जैसे एक चीज को वो डिस्क्राइब करेगा, उसको इलैबोरेट करेगा, राइट? इट विल एक्चुअली बी सो डू यू ऑल रिमेंबर एक्सप्रेशनिज्म क्या कर रहा है? एक्सप्रेशनिज्म वांट्स टू एक्चुअली टॉक अबाउट योर सब्जेक्टिव ओपिनियन. हम लोग विमेन्स राइटिंग्स भी जब कर रहे थे, व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट? फीमेल सब्जेक्टिविटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? फीमेल सब्जेक्टिविटी is something which became very important. So when we are looking at female subjectivity, what are we able to see? By the way, you shouldn't rub your eyes, and especially with COVID rising, don't ever do that. So don't get inspired from this aspect. You should just keep your hands as much as away from your eyes as possible. It's actually peeling, so I'm just trying to give it some sort of warmth altogether. Okay, so what are you able to see? You're able to see that ये जो है, ये आपको elaboration देते हैं, exposition देते हैं, express करते हैं, right? It can be logical presentation, it can be emotional elaboration, it can be any sort of, but आप elaborate कर रहे हो, आप बताने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको अच्छी तरह से, जैसे हम कहते हैं ना, विस्तार में बताइए. You are actually doing that. आप उसको elaborate कर रहे हो. If you don't like something, why you don't like something, you're actually mentioning that. That is what is expository. Now, for a writer, when I asked you this question, for a writer, it is important for a writer to actually blend all of these. एक अच्छा राइटर क्या करता है? एक अच्छा राइटर डिस्क्राइब भी करेगा, एक अच्छा राइटर नरेट भी करेगा, एक अच्छा राइटर एक्सपोजिशन भी देगा, इलैबोरेट भी करेगा, राइट? सो आपका डिस्क्रिप्शन लैंडस्केप या पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, नैरेटिव जो हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने से हो सकता है, एक्सपोजिशन आप जब विस्तार में डेप्थ में जा रहे हैं, वो चीज हो रही है, डिटेल में जा रहे हैं. बट
for a good writer to write a prose piece, right, which is actually seminal, they're actually merging all the three together. So ये जो तीन divisions हैं, they are not rigid divisions. They're not rigid divisions. You actually have to put everything together. You actually have to put everything together. तो ये please थोड़ा सा इसको याद रखिएगा. You will have to keep this in mind. You will have to remember that. अच्छा, now one form of prose. This is the last thing that we are doing today. Like I told you, we'll be wrapping it up a little early. One form of prose जो कि आपके एग्जाम्स में आता भी है, even foundation batch में I was just like submitting the deck for your शॉर्ट स्टोरी का जो यूनिट है. सो शॉर्ट स्टोरीज हम लोग काफी सारी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज को कवर करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी राइटर्स को कवर करने वाले हैं उस मॉड्यूल के अंदर. एंड व्हाट आर यू एबल टू सी दैट व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट स्टोरीज, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट short stories all together, please remember, please keep that in mind, that your short stories become extremely critical, because ये भी थोड़ा सा मर्ज करने की कोशिश करती है ये तीन एलिमेंट्स. लेकिन obviously because there is a time constraint, और आप उसको क्रिस्प वे में लिखना चाहते हो तो एक फॉर्मेट ही आ पाता है. सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल कि कौन से शॉर्ट स्टोरी का पार्ट है. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. जूडा वाटिन, हैज एनीवन हर्ड अबाउट जूडा वाटिन? जूडा वाटिन. एंड सबसे पहले आई वुड लाइक टू से इट्स नॉट अ शी, राइट. एक क्लास में आई रिमेंबर व्हेन आई वाज टीचिंग, दे वर लाइक शी. Judah is not a she. Judah is a he. Has anyone heard about Judah? Has anyone heard about Judah Watten? Judah Watten. Has anyone heard about Judah Watten by any chance? Judah Watten. Has anyone heard about Judah Watten? Has anyone heard about Judah Watten by any chance? Okay, so Judah Watten, हाँ, Aziz कहती मुझे भी लगा she. So Judah Watten is a he. He is an Australian writer. ठीक है, ये एक तरह से इनकी जो writings है, you will be able to see he is also getting inspired by socialism. इन्होंने एक work लिखा है Hunger, which was actually proletariat in nature altogether. ठीक है, and ये लिख रहे हैं एक story which is called Mother. Okay, he is writing this story which is called Mother. और ये स्टोरी को हम लोग जूडा वैटन की एक स्टोरी को अच्छी तरह से एक बार देखते हैं. सो लाइक आई टोल्ड यू, जूडा वैटन इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर, बट अ रशियन born Australian writer. One second, I'll just reduce my, yeah, this will be better. So he is a Russian born Jewish writer. ये Yiddish भाषा को भी, Yiddish language is also something that he was using, and then later of course he learned English, and then he started producing work in English. देखो, please remember, one of my very close friends, so she is really she's just kind of researching also on आई डोंट नो आप लोगों ने मूवीज देखी है म्यूनिक वगैरह, तो वो जर्मन नाजी इनकाउंटर, जर्मन में नाजी का जो पूरा मूवमेंट था, एंड हाउ ज्यूज वर ऑस्ट्रेसाइज्ड, एंटी सेमिटिज्म जो आ जाता है, दैट इज समथिंग व्हिच इज गेटिंग एक्सप्लोर्ड. So when you are actually Schindler's List, for instance, when you see Schindler's Ark, जो आपकी मूवी आ जाती है ये सारी, तो आपको और अच्छी तरह से पता चलता है. Now most of the Jews were migrating. ध्यान से सुनिएगा, most of the Jews were migrating from Germany and other parts of Europe, because because obviously these fascist forces were rising against them. So they were actually going because they wanted to be saved. लेकिन जूडा वैटन की जो फैमिली है, जूडा वैटन्स family did not come. They did not migrate for safety purposes. They migrated for better opportunities. और आप ये देख पाते हो, because we remember we also studied this week only in the YouTube class, we studied about how you were able to see that Fijian migratory writing. So indentured laborers भी आपके आ रहे हैं. In India we are able to see your indentured laborers as well, right? So yes, Kasuri, not just that, ये आपका Judah Watten has now become an epicenter in post-colonial studies as well, because Australian literature आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो गया है. So Australian writings have actually become very important. So please keep that in mind. Okay, Neha, I'll definitely try that. So Judah Watten is coming in. Judah Watten is trying to write, and
I want you all to compare this with Henry Lawson's The Drover's Wife. Henry Lawson is also an Australian short story writer, has been asked in your net exam as well, right? Henry Lawson has been asked in your net exam as well. I'll come in the middle so that you'll all be able to see, or otherwise I think you are able to see that, but still, nevertheless, I'll come in the middle altogether. So आप यहाँ पर क्या देख पाते हो that Judah Watin, learned English, of course. By the way, Yiddish linguistic heritage आ रहा है. ये एक क्लास हम लोग करने भी वाले हैं, वर्ड्स दैट वर बोरोड, बिकॉज बोरोड वर्ड्स से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, एंड प्लीज रिमेंबर that when we are talking about Australian writings, as it is Australia as a penal colony, Australian literature is trying to search for meaning and individual identity. और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो Jewish migrants हैं आपके, राइट, जो Jewish immigrants आ रहे हैं आपके, most of them, like I told you, सबसे ज्यादा ये लोग क्यों जा रहे थे, सबसे ज्यादा they were going because they wanted safety. But Judah Watin की family was absolutely different altogether. You were able to see that they were absolutely different. So please keep that in mind, that most of the people, most of the Jewish immigrants, why were they going? They were actually going because of Hitler, but this was a little different. So please keep that in mind. All right, इनका immigrant experience was very different. So immigrant experience, diasporic writing वैसे भी हम लोग करने वाले हैं. We will be talking about how diasporic writings emerge, what are diasporic writers' major concerns altogether. So Judah is talking about this diasporic existence, कि कैसे it is not easy for you to accommodate yourself. It's always a tough struggle altogether. So that really is one of the epicenters, right? That is something which is the epicenter that you're largely able to see. तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. और इनकी टेल्स अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड हैं. His impoverished family, right? The salesman father, and mother is actually trying to tell you. अच्छा, I want you all to compare this with Mrs. No, I want you all to compare this with Sons and Lovers. Sons and Lovers may be. Remember Gertrude Copart. Gertrude Copart is not happy. Gertrude Morel, she becomes Gertrude Morel. She's not happy with her husband. She's not happy with the minor community, or the life that the minor community is actually giving her. So how it's of course inspired from his own experience. His mother was also not happy. The mother was not happy with the surroundings. The mother was not happy with what was happening around. The mother was not happy with the husband altogether. But still, the child, the son, in the story by Judah Watin, he's trying to talk about his mother. तो यहाँ पर mother जो Judah Watin की story है, right? ये this is a short story. This is a form of prose, right? This is what? This is a form of prose. ये आप एक तरह से देख पाते हो. This is one form of prose that is clearly coming in, ठीक है? So it is telling you the story of this orphan girl. She is called the mother, and यहाँ पर don't forget Mother by Gorky, right? यहाँ पर don't forget Maxim Gorky का mother, and don't forget German writer Bertolt Brecht, right? German writer Bertolt Brecht का mother courage, ठीक है? So Brecht is of course German. कल हम लोग epic theater करते हुए we were talking about it, and Gorky is of course Russian. So ये आप ना थोड़ा थोड़ा अपने आप को बीच बीच में quiz करते रहा करो. Just keep on quizzing yourself कि भाई क्या चीज है, what is it all about. So you should remember that. All right, so please remember that. And the story is of course about the narrator's mother, whose name and date of birth is not really known altogether, but how her life is filled with challenges. यहाँ पर I want you to compare this with Henry Lawson's The Drover's Wife, right? Remember Common Man is becoming at the epicenter. ये हम लोगों ने देखा भी हुआ है Mary Magdalene के अंदर classroom class में this week we were talking about it, right? So Henry Lawson again, he is also an Australian short story writer. What is he writing? He's writing Drover's Wife. Drover's Wife किसके बारे में बता रहा है? How the Drover's Wife is actually trying to make sure, छोटा सा episode where she wants her family to be away from the influence of the snakes, right? That is what you're actually able to see. So please keep that in mind. Yes, Himanshi, please. देखिए जो एटलीस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास में, नेक्स्ट वीक हम लोग बहुत ही, मैंने नेक्स्ट पूरा वीक एक क्रिटिक को डिवोट किया है जिसकी बहुत ब्यूटीफुल बुक्स हैं जो हम लोग एक्सप्लोर भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने हम अपने एडवर्ड एल्बर्ट, रॉटलिच वगैरह के पीछे पड़े रहते हैं कि we've actually forgotten a very beautiful writer who's actually written for net aspirants only, and that's John Sutherland. We'll talk about him also. मैं आपको कल इंट्रोड्यूस भी करवाने वाली हूँ ये.
I'm so sorry. Yeah. So please keep that in mind. These challenges bring, change overall in her life. She's suffering from a sense of insecurity. Also, marriage भी बिल्कुल help नहीं करती है, right? So clearly you are able to see that she's having problems over here. So ये जो है, ये of course he is getting inspired from his own life also. Like I told you, most of his works were he's written works like Hunger. Hunger was one of his first novels that came in. इसके अंदर रियलिज्म दिखाया हुआ था. रिमेंबर हु इज कंसिडर्ड टू बी अ पायनियरिंग राइटर ऑफ सोशलिस्ट रियलिज्म. आई थिंक हम लोगों ने यूट्यूब में भी करा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? So please keep on correlating all of these aspects. That of course becomes important. His mother was of course working hard for a better life, trying to fill the home with literature, music, all together. Though a way of escaping, that is something that you were able to largely see. So again, this is what we are able to see, that this particular work is trying to talk about how these people are migrating and why are they migrating. I'll quickly hide myself for better opportunities. ठीक है? So Judah Wharton की जो story है, that is because it's of course it's trying to show you anti-Semitism, irrational hatred towards the Jews. So irrational hatred towards Jews. जो irrational hatred towards Jewish people होता है, that is famously called as anti-Semitism. That is what you're actually able to see. Okay, so many people were actually going because they were getting persecuted by Nazis, and Judah Wharton actually is trying to talk about it. So this entire work, right? ये जो पूरा का पूरा work है, ये जो पूरा का पूरा आपका work आ जाता है, what are you basically able to see over here? You're predominantly able to see that this entire work tries to tell you the story beautifully, straightforward way में ये short story आपको ये convey करती है. तो imagine करो कि एक short story के माध्यम से you're actually able to understand what is historically happening, what is geopolitically happening, what is the condition altogether, how Australia में immigrants की population आ रही है, right? And that is what you're largely able to see. सिंपल स्टाइल ऑफ राइटिंग है, क्रिएटिंग रिक्रिएट्स द बैकग्राउंड, आपको कैरेक्टर्स के बारे में पता है. जस्ट कंपेयर दिस विद कोडसी. कोडसी विल नेवर टेल यू द कलर ऑफ द स्किन ऑफ हिज कैरेक्टर, बट आपको पता चल जाएगा बिकॉज ही यूजेस डिस्क्रिप्टिव प्रोज स्टाइल. इन डेप्थ he will talk about an expository prose style of writing where he'll elaborate, he'll tell you, और आपको पता चल जाएगा फिर, even though he'll not explicitly say whether the character is black or brown or white or mixed or mulatto, he will make sure that you actually understand the writer in greater detail. That is the beauty. Okay, so please keep that in mind. So basically its theme is, we can conclude, sacrifice, and how much he sacrifices for a child and bond between. Actually it's not it's just not sacrifice. That will be the iceberg technique, that will be the superficial thing, but it is trying to tell you about the immigrant experience. It's trying to tell you about influx of immigrants in Australia. It is trying to tell you about common people and what they go through. It's trying to tell you about aspiration, and when you don't achieve that aspiration, how do you feel. तो multiple levels के ऊपर you are actually able to analyze it. So ये आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है. ठीक है? So please remember that. And of course, instead of reporting the events, see, he adopts a dramatic device of presenting the dialogues, right? That is what he's actually doing. Remember, Seamus Heaney also says that between my thumb and the finger there is, a pen, and I'll do digging. Joseph Conrad, his father died fighting, and his uncle told him that I don't want you to become a soldier. So therefore, how is Joseph Conrad fighting? He's fighting with his pen. That is what you're able to see over here. Okay, so please remember that. And lastly, coming on, what are you able to see that overall जिस तरह से mother को define किया जाता है, जिस तरह से mother के बारे में बताया जाता है, how mother is actually able to find solace in common things, that is actually coming across. Fine. So like I said, today we're going to be keeping it a little brief. We will be keeping it a little shorter and crisper altogether. ठीक है? That's what essentially we're going to be doing. कल I will be meeting all of you at 12 o'clock. Please block your calendars. I'll share it on the Telegram platform as well. Right? कल और परसों. So let's just make sure that our 30th and 31st we are meeting, and we are trying to make sure that we revise and make our commitment even more stronger. बाकी सारी details और भी ज़्यादा I will be of course sharing it with all of you. Fine. Thank you so much, Himanshi, Kasturi. Okay, Himanshi. All right, great. Thanks so much, Neha. Thank you so much. Great. All right, everyone. I'll catch up with all of you.
Sakshi, I've already told you, आपको मैंने WhatsApp पे भी बताया था that Orient Black Swan, if you're able to get it, please go ahead and it'll be a good investment altogether. But if you are not doing it, आपका foundation batch में definitely, a lot of important pointers, especially आपके PDFs के format में, आपके classroom discussions में, so you don't have to be worried about essentially about this thing. नेहा, कूपन कोड भी आपको you can call the helpline number and they'll give you my coupon code. ठीक है? Alright, thanks so much. Good night, Subhashish, Supratim, Devashish, Sanshri, Satendra. ये सब चीजें भी ना, I'll attach it on the PPT so that you're actually able to do that. Alright, thanks everyone. Thanks everyone. I'll catch up with all of you tomorrow. Thanks.